Namaste, I JBN Varsha Singh from Jyoti Vidyapith Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In today's session, we will learn how to represent octal system and its conversion from binary to octal, octal to hexadecimal, and octal to decimal and decimal to octal, right? In previous session, we have discussed about binary system and binary conversion of binary to decimal, decimal to binary form. In this session, we will learn about octal and hexadecimal, right? So first of all, what is octal system? So octal system, computer scientists are often looking for shortcut to do things. One of the ways in which we can represent binary number is to use their octal equivalent instead. This is especially helpful when we have to do fairly complicated tasks using numbers. Then we will use the octal system. The octal numbering system includes 8 base digits 0 to 7. After 7, the next placeholder to the right begin with the 1. Okay, so in octal system we have base is 8. Likewise, in a binary form, having base is 2. Okay. So see how to represent the octal number. Likewise, we have 241. We have decimal number 241. Okay. And we have to convert it into octal number. If I want to convert it, if we can convert it into binary form also, but for saving time we have a method to convert it into octal. Okay, so as you know, if we have to go from decimal to octal, that means you are going from 10 to 8 base. Okay, so here we are using 8 in place of 2. So see, first of all we have to count how many numbers we have. So here is a 0. Okay, 0, 1 and 2, right? So whenever we have to represent this number, we have to use these number in exponential form. Okay, and we have 1, so we have to write its value. That means here whatever here is value, that means the value should be on. Okay, so I have to write 8 to the power 0 multiplication 1. This is 1. If instead of 1, it could be anything like 3, 4, 8, 9, 10, 9. ओके, सो इफ़ मान लीजिए यहाँ पे 1 के जगह पे यहाँ पे 8 होता तो मुझे 8 टू द पावर 0 इंटू 8 लिखना होता है, 8 टू द पावर 0 इंटू 8. लेकिन आपको मालूम है कि 8 टू द पावर 0 क्या होता है, आपका 1 होता है. ठीक है, फिर लेकिन मल्टीप्लिकेशन करोगे 8 से तो क्या वैल्यू आएगी, 1. लेकिन यहाँ पे तो आपके पास 1 वैल्यू है, तो आपने 8 टू द पावर 0 किया तो 1 आया, और 1 वैल्यू आपके पास है तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ पे जो नंबरिंग हमने करी है वो 1 है, तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, 1. और मल्टीप्लिकेशन आप किससे करोगे, 4 से. जो भी यहाँ पे गिवन नंबर होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है मुझे. फिर यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2 है ना, और ये वैल्यू भी 2 गिवन है, तो 8 टू द पावर 2 और वैल्यू जो गिवन है 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा, यानी 1 यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 64 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 128, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 32, और 1 तो 1 ही आएगा. ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो देखो एज इट इज़ फिर से ये नंबर आपको मिलेगा.
आप फिर चेकआउट कर सकते हो कि मैंने गलती तो नहीं करी है, तो इसलिए आप यहाँ ऐड करके देख लो। तो 8 3 11 कैरी 1 2 3 okay okay let me check. Okay, so I have to change it into octal form na. So see, this value would be not to the similar of decimal number. It will change 8 2 3 is 5 5 1 6 and 161. Okay, so we have 161 value, right? Okay, so this is the process to convert it into octal form to decimal to octal, right? Next we have how to convert decimal to octal. So as we have converted decimal to binary, and we are in binary we have 2 in base, and here we have 8 in base, so we have to divide with the value of 8 instead of 2. Okay, as the name suggests, octal, that means the base should be 8. Okay, so here we have value 44978. Whatever the quotient you get, you should write here, and remainder see, here is not in 1 or 0 form, it could be anything. So we have remainder 2, and then again we have to divide the quotient with the 8 and get the remainder 6 and 702, and divide the value and get the 6, and likewise we have to do till quotient would be 0. Again अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, बॉटम से अपर साइड। तो मैं क्या वैल्यू इसको लिखूँगी 1276662। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यू आई। आपने इसको कन्वर्ट किया जब डेसिमल से ऑक्टल फॉर्म में, तो ठीक। ये दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। I hope you enjoyed my session. If any query regarding this session, please comment below. I will try to resolve in your next session. Okay, we have another binary system, your hexadecimal. Hexadecimal is represented in like this. 161, here is 16. Okay, so how to convert 161 into decimal form? So likewise we have to divide 161 into 16 likewise, and get whatever you get the value, that was your no, if you have to convert it into sorry, let me clear one thing. If you have value 161 and base 10, and you have to convert into hexadecimal, then what you have to do? You have to divide 161 by 16, and whatever the value you get, you have to write. Okay, the another process to divide this number like this, you can divide also like this 161, and you can write the 16 here, and here is your quotient, and the remainder would be 1. Okay, right? Again
If we divide, then remainder would be 10 and quotient would be 0. Okay, so how can you write 0, 10 and 1? But I want to let you know, in hexadecimal we can't write 10 like this. Okay, we have, see, in octal form we have maximum remainder would be 7. It doesn't go beyond 7, right? But in when we have hexadecimal, the remainder can go till 15. Okay, सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको हेक्साडेसिमल में आप 9th के मतलब 9 तक तो आप बाइनरी फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंट करते हो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन हेक्साडेसिमल में एक और रूल आ गया है आपके पास कि वहाँ पे 10 अगर आपको लिखना है ना तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ए से, 11 लिखना है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बी से, 12 लिखना है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे सी से, 13 लिखना है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे डी से, और आपको 14 लिखना है तो रिप्रेजेंट करोगे आप ई से, और 15 रिप्रेजेंट करना है तो आप करोगे इसको एफ से। बस ठीक है, क्योंकि इतने ही रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी है। तो आप 10 के जगह ए लिखोगे, 11 के जगह बी लिखोगे, 12 के जगह सी लिखोगे, 13 के जगह 10 लिखोगे, डी लिखोगे, 14 की जगह पे आप ई लिखोगे और 15 की जगह पे आप एफ लिखोगे। इसको आप डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15, राइट, बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर हो जाते हैं ना, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन आपको अब ऐसे करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू।